Good morning, students. Today we are going to start with our next topic of consumer equilibrium. In our previous class, we had discussed about the total utility and marginal utility and the relation between both these two concepts. So we are taking a few examples that are given in the book as how we can derive marginal utility when total utility is given to us, or how we can derive total utility when marginal utility is given to us. So as you can see on the screen, in the first example we are given a total utility schedule of individual A. ठीक है, हमें इसकी marginal utility बतानी है इस schedule से. ठीक है, so according to this table there is a person whose name is A. He has consumed 5 units of a particular commodity and he has generated this much of total utility. Like when he consumed nothing, his total utility was 0, but when he had the first unit, his total utility was 15. Then after consuming 2 units, his total utility was 28, and so on, right? So after consuming the total bunch of 5 units, his total utility was 61 utils. Okay, now given this table, how we can calculate the marginal utility? As I told you in the previous class, that marginal utility is basically the satisfaction that has been derived from the consumption of one extra unit of the commodity. So this is given to us. This units consumed and total utility is already given to us. Now we need to calculate the marginal utility, means after consuming one additional unit, what is the difference in the total utility, right? So when we consumed the 0 unit, our total utility was 0, so we cannot define our marginal utility. But when we consumed one extra unit, like after the consumption of first unit, our total utility was 15. Marginal utility will be 15 minus 0, so it is 15 again. Now when we consumed the second unit of the particular commodity, it would be 28 minus 15. Like this additional unit is giving us the 13 utils of extra satisfaction. Okay, and after the third unit we consumed, our marginal utility will be 40 minus 28, that is 12. Fourth unit of commodity will be 51 minus 40, that is 11. Fifth unit of commodity will be 61 minus 51, that is 10. So as you can see, although our total utility has increased with the increase in the consumption of particular unit, but our marginal utility has substantially declined, because when we consumed the first unit, whenever we consume a first unit of a commodity, our marginal utility is high. Okay, but when we start consuming the subsequent units, then it starts to decline. Okay, so this is the reason that marginal utility curve is downward sloping and total utility curve is upward sloping. Okay, so this is how we calculate marginal utility from total utility. Now in the next question, our marginal utility is given to us and we need to calculate the total utility. It's very simple. As the units are being consumed and as the individual utility is given to us, we just need to total it up, we just need to sum it up and derive the total utility, right? So when the first unit of commodity was consumed, the person gained 16 utils of marginal utility, and when he consumed the second unit, the extra satisfaction that the second commodity bought for him, that was 15. Then the additional utility that this third commodity, third unit brought to him was 13, and so on. So when he consumed the sixth unit of the commodity, he was not at all satisfied, or he was just merely satisfied with just one util of satisfaction. Okay, so now the marginal utility is given to us, we need to calculate the total utility. It's very simple, we just need to sum up with the subsequent utilities. So for the first unit, the marginal utility and total utility always remains the same. Now when the second unit is consumed, our total utility will be 16 plus 15, that is 31. So after the consumption of second, after consuming 2 units, our total utility is 31. After consuming 3 units, our total utility is 44. This is 31 minus 31 plus 13. Okay, this is 44. Now adding up these 44 to the extra marginal utility of the fourth commodity, that is 10. So 44 plus 10 gives you 54.
54 plus 6 gives you 60. 60 plus 1 gives you 61. So this is how a total utility is calculated given the marginal utility. So these were the two practical examples. You can get questions like this in your exam for 2 or 3 marks. Okay, so this was very basic. Now we are going to start with the next topic, that is law of diminishing marginal utility. Diminishing means declining, decreasing, right? So this we have already studied in our previous classes, that whenever we increase the desire of a commodity, or whenever we start consuming the extra commodities, so substantially the satisfaction of that gained from that particular product starts to decline. Okay, so psychologically the intensity of desire for a commodity tends to decrease as more and more standard units of commodity are consumed. Obviously whenever we जो first consumption होता है of a particular unit of a particular commodity, that gives you the highest satisfaction. उसके बाद अब जब ज़्यादा उसको consume करने लग जाते हो, the more you consume it, the less satisfaction it gives to you. ठीक है, तो like a cup of tea, not a spoon of tea, glass of milk, not a drop of milk. Okay, so whenever you कंज्यूम मोर और मोर ऑफ कमोडिटी, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उस चीज़ से जो है वो डिक्लाइन होने लग जाता है. तो इट इम्प्लाइज दैट द कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस. ठीक है, तो हम जब ज़्यादा से ज़्यादा सपोज अ पर्सन लाइक्स चॉकलेट, उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो कंटिन्यूसली बार बार चॉकलेट्स ही कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है चॉकलेट्स का वो कम हो जाएगा. इनिशियली जब वो चॉकलेट्स कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन वुड बी वेरी हाई. ठीक है, बट द मोर ही स्टार्ट कंज्यूमिंग द मोर एंड मोर चॉकलेट्स, तो somehow his utility that's being derived from that chocolate would start to decrease, and this is known as law of diminishing marginal utility. कि marginal utility जितना extra आप consume करते जा रहे हो that particular commodity, उतना ही आपका जो marginal utility है वो diminish होता जाएगा, वो decrease होता जाएगा. So this is known as law of diminishing marginal utility. So it is in accordance with this law that marginal utility is shown as diminishing. तो हमने जो इनिशियल टेबल्स देखे थे, टेबल 1 एंड फिगर 1, लाइक लेट मी टेक यू बैक. दिस इज टेबल 1. हमने जब देखा था कि हाउ वी कैलकुलेट द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो और ये उसका कर्व है. दिस इज द फिगर 1. तो आपने देखा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जितनी ज़्यादा हम कमोडिटीज़ कंज्यूम करते जा रहे हैं उतना ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो विद द टाइम डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, इसी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हैज़ बीन शोन एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन, कि जितना ज़्यादा हमने कमोडिटीज़ कंज्यूम करी, जितना ज़्यादा हमने यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी कंज्यूम करी, उतना ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी दैट हैज़ बीन कंज्यूम्ड. बट टोटल यूटिलिटी टेंड्स टू इंक्रीज, बट ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट. टोटल यूटिलिटी ज़रूर इंक्रीज हो रहा था, बट एट द डिमिनिशिंग रेट. हाउ, व्हाट इज नोन एज डिमिनिशिंग रेट? एज यू कैन सी दैट टोटल यूटिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इंक्रीज होता जा रहा है. जितना आप कमोडिटी कंज्यूम करते जा रहे हैं उतना ही आपका टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. लाइक पहले वो 100 था, देन इट इंक्रीज एट 190, तो 90 का डिफरेंस है. देन इट इज इंक्रीजिंग एट 270, तो कैलकुलेट करेंगे तो 80 का डिफरेंस है. 270 से इट हैज़ गॉन टू 340, 70 का डिफरेंस, एंड 340 से इट हैज़ गॉन टू 400, तो 60 का डिफरेंस है. तो इंक्रीज तो हो रहा है, बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग और अ डिमिनिशिंग रेट. ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि जो MU है इट इम्प्लाइज एडिशन टू टोटल यूटिलिटी. तो अगर MU हमारा डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है, तो हमारा एडिशन टू TU इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, एंड अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग MU इम्प्लाइज दैट TU इंक्रीजेज ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट. सो इफ यू रेफर टेबल 1, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि जैसे जैसे हमारा इनिशियली जो टोटल यूटिलिटी था वो 100 था, फिर वो बड़ा है बट एट द डिक्रीजिंग रेट. वो पहले 90 से बढ़ा तो वो 190 हो गया, देन वो 80 से बढ़ा तो वो 270 हो गया, देन इट इंक्रीज्ड बाय 70, सो इट वाज 340, एंड फाइनली व्हेन इट वाज इंक्रीज्ड बाय 60 तो इट बिकेम 400. सो ऑल्दो TU इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 to 400, but it has increased at a diminishing rate. This is very important for all of you to understand what is
TU increasing at a diminishing rate, and MU is law of marginal diminishing marginal utility. So these both are interrelated with each other. Now जब हम ये लॉ फॉलो करते हैं तो इसमें कुछ दो बेसिक assumptions हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो क्या हम बात कर रहे हैं? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी. यहाँ पे बात हो रही है कि whenever we follow this law of diminishing marginal utility, so whenever we are consuming a particular item, it has to be consumed in a particular pattern, and we need to follow that pattern throughout. कि अगर हमने एक कप चाय पिया है, दूसरा कप चाय पिया, तीसरा कप चाय पिया है, उसके बाद हम स्पून्स पे आ जाए कि हमने अपने या तो कप का साइज छोटा कर दिया या हम स्पून ऑफ टी ले रहे हैं, तो वो इसमें लॉ अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. सो वट एवर यू आर कंज्यूमिंग इन अ स्टैंडर्ड मैनर. ओके, you are consuming in a standard units, you are not changing the units or you are not changing the pattern of consumption. Okay, next is consumption of the commodity is continuous. Whenever we talk about total utility and marginal utility, it takes place at one point of time. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया दैट यू आर हंग्री एंड यू सैट डाउन फॉर योर फूड, you're taking your lunch, your mother is serving you chapatis. So आपने एक चपाती खाया, you were highly satisfied because you were very hungry, but then when substantially your mother started you serving more and more chapatis, so your utility started to decline. Okay, for that particular chapati, and that is happening because you are taking all the chapatis at a one particular time. It will not happen that today you took one chapati and in the night for the dinner you are taking the second chapati, and again for the next day you're consuming the third chapati, and in the dinner for that second day you are consuming the fourth chapati. Then we will not be able to calculate the total utility and marginal utility from all of these four chapatis because you have taken them at the different time zones. Okay, so whenever you're consuming anything, whenever we are applying this law of diminishing marginal utility, so that consumption has to be continuous. It can never happen that you're taking one commodity today and the other commodity tomorrow. जब दोबारा आप वो चपाती खाओगे तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा बिकॉज अगेन यू आर हंग्री एट दैट सेम टाइम. तो उस टाइम पे अगर आप खाना खा रहे हो और आपने जो पहली चपाती ली है तो ऑब्वियसली वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा जो आपने कल जो पहली चपाती खाई थी. ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं हो रहा, इसलिए ये लॉ जो है यहाँ पे फेल हो जाएगा. सो देर आर टू लॉज दैट वी नीड टू फॉलो whenever we understand and study law of diminishing marginal utility, that the commodities are being consumed with a standard unit and the consumption is happening in a continuous rate. Okay, so this is about the basic assumptions of law of diminishing marginal utility. Now this is a question which is given in your exam, that can marginal utility be negative? Of course marginal utility can be negative. ओके, बिकॉज इट इज़ अ सिचुएशन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे और हमारी जो सेटिस्फैक्शन है इट विल कन्वर्ट इनटू डिससेटिस्फैक्शन. तो अगर हमें भूख है सिर्फ 3 रोटी की, तो हमने 3 रोटी खा ली, तो हमारी सेटिस्फैक्शन पहली रोटी पे 10 थी, दूसरी रोटी पे 5 थी एंड तीसरी रोटी पे 0 थी. अब उसके बाद अगर ज़बरदस्ती मम्मा ने 2 चपातीज़ आपको बना के दे दी एंड शी डजंट वांट यू टू वेस्ट योर फूड, तो उसके बाद आप जो खाना खा रहे हो बिना भूख के, तो उससे जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो 0 भी नहीं रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा. यू वुड लाइक टू प्यूक, राइट. आपका मन ही नहीं करेगा कि आप इससे ज़्यादा खा सको, बट ज़बरदस्ती आपको खाना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ योर मदर बिकॉज शी डजंट वांट यू टू वेस्ट योर फूड. सो दिस हैपन्स विद मोस्ट ऑफ अस कि हमें जब मन नहीं होता तब भी हमें कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन यील्ड हो रहा है वो नेगेटिव यील्ड हो रहा है. ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग योर टेस्ट, इट इज इम्पैक्टिंग योर हेल्थ, इट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल. ओके, सो दिस इज व्हेन योर मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव. Okay, so now this is the next topic is the proper concept of consumer equilibrium, and this is all about that how a consumer will get a satisfaction when a particular income is given to him. Okay, and he is not in a mood to make any changes in his existing expenditure. So this is the concept of consumer equilibrium, and this is a lengthy concept, so I think we should be continuing this in our next class. So for now, for today, what was important for you to understand was the practical examples of marginal utility and total utility and the concept of diminishing marginal utility. Next we can continue in our next class. Thank you.